Hello, good evening, everyone. Good evening, Dear, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. yeah, kindly please open your videos. Good evening. Dear teachers, kindly switch on your cameras. Okay, good evening, everyone. Myself, Aditi Pujari here. I think everyone knows about Canva. Yes? Are you aware about Canva? Okay, that's good. So Canva is an app which we can use in our mobile phone also and with the help of laptop. So let's we start on working on it. Let's have a quick introduction about everyone. Dear teachers, please. Hello. Yes, everyone. Yeah, unmute yourself and give we are your... able to hear it. Is I audible? Yes. Yes. Kindly give your brief introduction, then we proceed with the session. Yeah. Good evening, ma'am. Actually, my name is Priya. I have my own tuition center. So I always love to upgrade myself. So Canva is one app, like if you know, you can create your own worksheets and PPTs. So I thought I'll just learn the basics from you, and then why not I create my own instead of buying from another source. So that's the main That's reason of being here. Thank you, ma'am. That's good. Thank you. Next one. Unmute your pile, ma'am. Please unmute yourself. Hi, good evening. I'm Payal here, and I think I know you, Aditi, quite well. Yes, ma'am. We work together. Yes, ma'am. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Absolutely. After a long time. Yeah. And as I said, even I'm into a school teaching. So I really wanted to upgrade because I know bits and pieces of Canva. So I want to just now fully learn it properly. So I'm looking forward to do it with that with you. Good. Yeah. Anybody else, please? Leena, ma'am. Hi. Yes. Yes, Ghazal, ma'am. Hello, I'm Leena. Yes, please. Hello, I'm Gazala, and I'm a teacher, and I'm also like I have joined this to learn to upgrade myself. As the other teacher said that on this Canva you can make many things. So I know little bit, just bits of it, not much. So I thought it's good opportunity to upgrade myself. Definitely, we will learn here lots of things. Yes, Leena, ma'am. Hi, I'm Leena. I'm a Kathak dancer and I'm learning also Kathak because complete my degree. And Canva, I'm update just myself. So I'm learning more and more. Thank you. Very nice. You can make very nice videos, rated videos here. Means if you are having Katha classes, so you can make Yeah, your Kathak videos here. classes. Yeah, Yes. I'm making my video. I'm on Instagram. I'm just making reels also. Yes, so with the help of this also, you can make your videos Yes. as well as Yeah, flyers my video and yes, my reels and all. by using Canva. Yes, Megha ma'am. Yeah. Thank you. Hi, myself Megha Kothari. Actually, I want to tap into the digital world. So Canva was a right platform, I thought, to learn. Okay, nice. Thank you. So let's move ahead without wasting time. So it's where we are going to use our creativity. Yes, Canva is that platform where we can use as much as we are creative. So here we are able to make lots of things like designing educational certificates, graphic organizers,
flashcards, greeting, digital stories, comic strips, infographics, animated videos, creative resumes, designing, Magic Studio, PPT presentations, worksheet, and many more things. So let's restart. Dear teacher, one suggestion for you, if you are going to make anything on laptop, it will be much easier if you are going to use laptops while for designing in Canva. It will be more easier to use. So let's start our first designing. Kindly everyone mute yourself. Everyone kindly mute yourself. Yes. So first phrase, we have to go to the Google. Right here, Canva. Search. And the first interface we are getting, Canva Visual Suit for Everyone. Just click it. If you are already login, अगर आप already login है, तो ये आपका direct open हो जाएगा. Otherwise, for login, sign up, it will require your email IDs. Yes. So dear teachers, first I'll explain you a simple task, and then you just write up the steps, and then I'll give you 5 minutes for making an assignment. So Can we use it without signing? Sorry? Ma'am, for sign in, it Can we use requires it without logging in? No, ma'am. Login is compulsory. Okay, so we'll have to create our account Yes. first, right? Yes, first you have to create your account. Or even with your email ID, just Google. So it starts with the Google Gmail ID only. Okay, So got first, it. dear teachers, please look first. Write the steps, then I'll give you 5 minutes to go, do that assignment. Let's first form a greeting. This is search bar. You just write here, greeting. Diwali. Greetings. Enter. These all templates. ये सारे templates हमें मिलेंगे. Now we can select any one template. Yes, आप उसको enter करेंगे. Then we get a pop-up, customize this template. Now we can customize this according to ourselves. Now this template will open. Now here, first of all, if I want to change my background, अगर हमें एक अपना background change करना है तो आप left hand side में आइए. यहाँ elements लिखा हुआ है. Yes, search bar में just write background. If you want of a particular color, then you can write background yellow. You can select any picture.
अब आप पिक्चर पे राइट क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा रिप्लेस बैकग्राउंड ऑप्शन, और अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपके नीचे की बॉटम साइड में ये सारे ऑप्शंस हैं। यस, तो डायरेक्ट बैकग्राउंड सेट हो गया। नाउ if I want to edit the return part, I can change it. Deepavali, I can change its fonts. जो भी आपको रिटर्न पार्ट में अगर उसको चेंज करना है तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट इट, go to the option font. Different fonts are here. You can select any one. Now it will change. डियर टीचर्स, अगर फॉन्ट का साइज बड़ा है तो आप बस उसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर फॉन्ट साइज भी लिखा हुआ है। We can change the font size. For changing color, you can change the color also, text color. See, we can change the text color. All the text colors are changed. Now, if we want to add something related to Diwali, अगर मुझे दिवाली से कुछ related और add करना है, elements में जाइए, just write here Diwali. In elements, you will get some of the graphics related to Diwali. Now kids are playing crackers like this. आप जो भी एलिमेंट से ग्राफिक सेलेक्ट करेंगे वो आपकी पिक्चर पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसको शिफ्ट करके उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इज इट विजिबल? अब जो मैंने पिक्चर लगाई वो बच्चों के ऊपर आ रही है तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन पोजीशन इज कमिंग हियर, जस्ट क्लिक द ऑप्शन पोजीशन एंड मूव टुवर्ड्स बैक। डियर टीचर्स, यहां तक किसी को भी कुछ डाउट है? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, please. Position back, can you redo that and show us, please? Yes, once How again I that will was show it now. Okay. मैंने एक एलिमेंट लिया ग्राफिक, आई एक्सटेंड इट। जिस भी पिक्चर को आपको बैकग्राउंड में लेके जाना है या बैक करना है तो जस्ट आप उसको क्लिक करिए। ऑप्शन आ रहा है वहां पे पोजीशन। इवन अगर आप मोबाइल फोन से यूज करें तब भी ये वर्ड आएगा पोजीशन, और अगर आप लैपटॉप में यूज करें तो पोजीशन। नाउ हियर फॉरवर्ड, टू फ्रंट, बैकवर्ड, टू बैक। टू बैक करेंगे तो डायरेक्ट बैक चला जाएगा, अगर आप बैकवर्ड करेंगे तो एक एक स्टेप बैक जाएगा। इज इट क्लियर? यस, ओके। नाउ ये हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज हाउ टू डाउनलोड इट। यस, शेयर में जाइए, scroll it, download option,
अब हमारे पास फोटोग्राफ्स डाउनलोड करने के लिए PNG, JPG, ये 2 ऑप्शंस हैं, दे आर गुड। अगर आपको प्रिंटिंग निकालनी है किसी भी फोटोग्राफ्स की, तो यू गो विद द PDF प्रिंटिंग, बिकॉज पिक्चर क्वालिटी PDF प्रिंटिंग में ज्यादा अच्छी आती है। और if you just want to send on the WhatsApp groups, so you just download from here, JPG or PNG, then you can download. I think, is it clear to all? Yes, teachers? Yes. Okay. Yes. Moving towards Could- next task. ये यहाँ तक Could clear you है? show, Yes, could ma'am. you show us how to group things? Because individual items could be moved. So Yes. it would be better to group it and then, isn't it? Or Yes. grouping would come Okay. later on. No, I'll show it here only. No problem. Okay. Is it clear? I'm moving to another slide. And ma'am, I want to know one more thing. Whether is this option available only for the paid version? No, ma'am. जो मैं आपको options बता रही हूँ, ये आप लोग without paid version भी use कर सकते हैं. Okay. These all are the normal functions which we can use. Okay. Is it clear? Yeah, okay, thank you. Yes. Okay. Let's just design a template by ourselves. I'll take a background. For easy, we can stretch it also. हम इसको stretch भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो हम बैकग्राउंड ले रहे हैं वो हमारे जो पिक्चर हमने साइज लिया है स्लाइड का, उस स्लाइड के अकॉर्डिंग नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू सेट एज अ बैकग्राउंड. राइट क्लिक करेंगे इफ वी आर डूइंग ऑन लैपटॉप और कंप्यूटर, जस्ट राइट द ऑप्शन रिप्लेस बैकग्राउंड, तो वो अपने आप फिट हो जाएगा. लेकिन अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो भी आप उस पिक्चर को क्लिक करेंगे, बॉटम में आपके ऑप्शंस हैं, रिप्लेस बैकग्राउंड और सेट एज अ बैकग्राउंड. इज इट क्लियर? नाउ टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे. 3 types of texts are there. Adding headlines, anyone you can select it. You can write here. Just okay. Okay, I took a text here. Now elements में गए. हमने अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स, यस. नाउ मैम यू वर आस्किंग फॉर ग्रुपिंग. जितने भी चीजों को हमें ग्रुप करना है, हमको उन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है. कंप्यूटर में अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो पिक्चर को सेलेक्ट करिए, देन प्रेस द बटन शिफ्ट, यू कैन सेलेक्ट द रिमेनिंग पोर्शंस. कंप्यूटर में हम शिफ्ट के थ्रू, और अगर हम मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल पे किसी भी पिक्चर को आप 2 मिनट के लिए क्लिक करके रखिएगा. देन ऑप्शन आता है मल्टीपल सिलेक्शन, बॉटम में ऑप्शन आता है मल्टीपल सिलेक्शन, वहां क्लिक करके आप सारी फोटोग्राफ्स को, टेक्स्ट को आप एक साथ क्लिक सेलेक्ट कर सकते हैं. देन यू कैन ग्रुप इट. नाउ ग्रुपिंग इट एंड नाउ यू कैन मूव इट लाइक दिस. इज इट क्लियर? यू कैन एक्सपैंड इट as much as you want. Is it clear to all? Okay.
Now, next is first task greeting. अब greeting आप लोग कोई सा भी greeting बना सकते हैं. Next is coming up to the certificates. Everyone. Certificate. You can choose any certificate, whichever you want. Again, customize it. This is also as simple जैसे हमने अभी greeting design किया. Certificate is also very simple thing. We can design, how we can edit it. We can change the color first. So, see, मैंने इसको select किया color change करने के लिए corner को, but actually color of corner is not able to change. यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि एक ऐसा ग्राफिक है इसमें कलर चेंज नहीं हो सकता. सो इधर यू कैन चेंज इट और यू कैन डिलीट इट, यू कैन ऐड अनदर कॉर्नर. तो हम अपने अकॉर्डिंग भी एलिमेंट्स में जाके वी कैन राइट हियर corners. We can choose according to ourselves like this. Dear teachers, मैंने ये corner select किया, but I think it is not going to fit here. मुझे इसको flip करना पड़ेगा. मैंने इसको flip किया. Option is coming here, flip. Is it visible to all? I'll just flip it horizontal. Now I can able to flip it. अब आप अपने लोगो के अकॉर्डिंग आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं. Yes. If I'll make a certificate for CMA, CMA logo is red, blue, green. We can scroll down and select our colors. Just a minute. Yes, is it visible? Color is changed. Now light color. ये जो blue color है, it is too dark. I want to change this to lighter one. We can shade it like this. उसी कलर को अगर आप प्रेस करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डार्कर और लाइट शेड यू कैन एडजस्ट इट. और यहाँ कलर्स से आप कोई दूसरा कलर भी चॉइस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? अब मुझे यही कॉर्नर नीचे भी चाहिए. जो नीचे है उसको मैंने डिलीट किया, इसी को मैंने डुप्लीकेट किया. आपके मोबाइल में ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट. लैपटॉप्स में यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब ये डुप्लीकेट ऑप्शन है. डुप्लीकेट अगेन, यहाँ मैंने स्क्रॉल किया. नाउ अगेन आई हैव टू फ्लिप इट vertically, then horizontally. Now it's fit. Is it clear to all? I think. Okay. Now, dear teachers, अब मैंने ये सर्टिफिकेट अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लिया. यहाँ पे नाम चेंज करना है. I can change it. Here I can change. I can change font. I think changing font size. Is it clear to all? Okay. But अब मुझे यही सारे सर्टिफिकेट्स बहुत सारे बनाने हैं. Now this is a big task कि हमको बार बार कॉपी करना पड़ता है. लेकिन हम कुछ ही सेकेंड्स में bulk certificates we can create. This bulk certificates we can't create with the help of mobile. We can only create with the help of laptops or computer. Okay. Now, please everyone note it down how to create a bulk certificate. Left hand side में जहाँ हमारे पास element,
टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है ऐप. Dear teachers, please everyone move to the app option. Write it down. Then just write here bulk create. आपको यही लिखना होगा bulk create, otherwise वो ऑप्शन नहीं आएगा. Please note it down. Bulk create. Write it down, please. Now, here option, first option is coming bulk create. इस पे click करिए. Now here data you can add manually. आप यहाँ पे अपने हाथ मैनुअली भी ऐड फीड कर सकते हैं या कोई CVC फाइल आप यूज कर सकते हैं. So first I'll give you the option to add data manually. Enter data manually. I don't want to change any email. यहाँ तक सबको क्लियर है? How we can go till here? I don't want this column. मुझे ईमेल वगैरह कोई चेंज नहीं करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगी and delete the column. Just a minute. Just delete the column. मुझे सारे सर्टिफिकेट्स में सिर्फ नाम चेंज करना है. Yes? So I can change the name. यहाँ तक सबको क्लियर है? Dear teachers? Yes, ma'am. Aditi, we will have to stop as I have another class. Okay. Sorry, ma'am. Okay. Dear teachers, this we will proceed tomorrow. Yes, please a small task for you. Everyone create certificate or a greeting and send it to group. Kindly